Let's come to oral communication now. ये वर्ड दी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में है, पेज 105, SLOS नंबर 1. रिमेंबर की मदद जो कि आपने लेनी है, मैं इसको पढ़ देता हूँ. Normally we pronounce the with a short sound the when THE comes before a consonant sound, but when THE comes before a vowel sound, we pronounce it as a long D. When we wish to place emphasis on a particular word, we can use emphatic D. D, whether or not the word begins with a consonant or a vowel sound. 3 बातें इसमें हो गई. ऑनरेबल टीचर, बच्चों को बताइएगा कि अगर तो वॉल साउंड, बिगिनिंग साउंड किसी वर्ड की वॉल साउंड है तो हम दी बोलेंगे. अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम द बोलेंगे. और अगर किसी जगह किसी लफ्ज पर जोर देना है और उससे पहले ये वर्ड है THE का, तो फिर चाहे वॉल साउंड हो या कॉन्सोनेंट साउंड हो जो बिगिनिंग साउंड है, फिर हमने इसको दी ही बोलना है. मसलन हम अगर कहना चाहें कि ये वो किताब है जिसकी तलाश में मैं था, तो आप कहेंगे दिस इज दी बुक, दिस इज दी बुक आई वॉज लुकिंग फॉर. आस्क द स्टूडेंट्स to role play the dialogue, page 106, SLO2. Daughter, Dad, why is it important to take a walk in a garden or a park? Dad, because trees give us oxygen and fresh air. Dad, of course we need fresh and clean air to breathe. Polluted air can make us sick. Daughter, then why do people cut down trees? Dad, they cut down trees for their materialistic benefits, not knowing that they are making a horrible trap for the next generation. Daughter, yes, you are right. They should know that we cannot survive without trees. Father, yes, dear, that's why we should plant more trees.